It looks like you're all very much interested in the practical, okay, more than the theory, because it took a very, very less time for you all to join for this particular session. Is that correct? You like practical more than the theory? Yes or Yes. Yes, sir. That's very good. Okay, so I was telling you about how to plot the graph, and I have selected one particular option. Okay, so you can see that I have already got this kind of a curve, okay, which we have already seen in the theory part. Okay, now this is a practical thing you are doing, just remember that. And whatever values I have taken here, these actually come from the past year record books of the students, right? And then you will see that when we have not added anything, the pH was something around, what was it? That value is given here, 2.5. That was the pH, okay, 2.5. And then when I went on putting the NaOH, then the pH kept on increasing. Initially, the pH increase was little sharp, okay, and then over the time, the pH value increase became lesser and lesser in this particular region, which we call as the buffering region. So I could already identify the buffering region here, which is approximately 1 pH unit below the pKa value, and 1 pH unit above the pKa value of the that particular weak acid. Okay, and then this is probably the point where you have maximum buffering capacity. Okay, and then maybe you can extrapolate this point here on the pH axis and find out what is that value. That value will be your pKa value. Okay, so that this is a very, very simple practical, I would say. Okay, now I'll just try to tell you what are the different types of graphs which I can plot here. I'll delete it. Okay, I'll select these two columns again, and then I go here, insert, and maybe I'll select which type. This one. This is a line chart. Okay, so let me select that line chart, and that's not good enough. Okay, that doesn't make any sense to me. So, okay, not very useful. There are some more options, but I think this is not, yeah, this one probably. Okay, this is the kind of a graph which I have got. Okay, now in this particular thing, I have the option of, say, I have selected this particular line. Okay, and then I click the right, I have the right click on my mouse. So I can format this data series. And if I don't want the line to appear, then probably I can do that also. Format data series. But the options are not coming here. Okay, since it is a line graph, I am not unable to remove the line. Okay, so instead of that, if I go for another chart type, maybe I go back to XY scatter, and in XY scatter, I'll go for this one or this one. Okay, now in this particular graph, you will find that the line is not there, only the data points are there. Can you see that? Only the data points are there. Yes, sir. Okay,
Now what I do is I select this particular series, okay, data series, and with the right click, I can do some kind of a formatting. Okay, I can add a trend line, for example. Okay, and can you see this line, this dotted line? That is the trend line. Okay, so what is a trend line? It is actually the best fit line. I think you might have already studied this somewhere. That is the best fit line, indicating that it is considering all the data points and it is averaging it out. Okay, so this is an average kind of a series, a line, okay, which is representing all of these points together. Okay, so if I want a linear line, for example, if there is a linear relationship between the independent variable and the dependent variable, okay, we have seen that in atomic absorption spectrophotometry or any UV visible spectrophotometry also. And I was telling you about the linear relationship or correlation between the dependent variable and the independent variable at that particular point of time. Okay, for such types of graphs, we normally add the trend line. Now this trend line is of no use for this particular curve that we are trying to draw. Okay, absolutely it is not useful, because if I draw this kind of a line, so just take for example, I'll make that line a little darker. Okay, I can format the trend line. Okay, maybe I can, yeah, I can make, I can increase the weight of that line like this. Okay, and I don't want a dot, I don't want the dots there actually. So how can I do that? Yeah, I can select it here, and I can also select the color also. Maybe I'll make it red color, this one. Okay, can you see that? That is the trend line. But then, as I told you, the trend line is absolutely of no use for this kind of a graph. Okay, because it will not tell you about the buffer region. It will not tell you about the pK value. Is it right? And therefore, maybe I can go for another type of a graph. Okay, or what I will do is, instead of using, yeah, of course, I have a line graph, but in the line graph, I have something called as a polynomial. I don't know whether it can be seen here. Yeah, in fact, this one was that only, polynomial. Okay, so it doesn't matter. What I actually want to tell you is that there is no need of adding the trend line here. Okay, so I can as well delete that trend line. It is gone. Okay, and this particular line that I have got, okay, right now I have removed the line also, but we can add the line. Format data series, and then I can put the line. It's not visible still. Are you able to see what I'm doing? Yes, sir. Yeah, so yeah, this is how I can do it. And I can change the color. No, but this still there is a problem. Only these data points, these points are getting the color, but I want to add the line actually. So how can I do that?
maybe my selection of the graph was not correct. Yeah. Yeah, if I select this kind of a graph, then I only get the line. Okay, just look at that. I get the line. The data points are not there, and that will show you a very clear line. Okay, better for your visualization. And if I want the data points to be seen, then again I have to select that the proper kind of a graph. Anyway, so these things can be done. That is what I wanted to tell you. And here it is written pH. So I think that is not the correct place where the pH should be there. So I can change the position. Okay. You can just see what I'm doing, so that how I can change the place, these titles. Okay, axis titles, and there is no axis title here. Okay, so what should I put here? Axis title, format axis. Okay. I think there is some problem with this version of Excel. I'm unable to find whatever I want to add there. Format axis, add minor grid line. I want to add a title. Okay, so maybe I can go to some other place, insert, okay, insert sheet, format. Where is that option to add the text or add the title? I cannot find it सर here. उसी में रहता है सर, मतलब वो जिसमें मतलब वो मॉडिफाई करने का आपने पहले खोला ना, उसी में रहता है। एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए था वो फॉर्मेट चार्ट एरिया. No, that is not the right one. Actually क्या है कि if I select this axis, see now I have selected the axis. Can you see that? I have selected the axis. So when I go to this and I say format axis, okay, format axis किया, तो उसने वो ऑप्शन मेरे को देना चाहिए कि to add the सर वो बाजू में वो टेक्स्ट ऑप्शंस में देखिएगा, कहाँ पे है वो? एक्सिस ऑप्शंस के बाजू में वो जो टेक्स्ट ऑप्शंस है ना, हाँ किधर है? फॉन्ट? नहीं सर, एकदम वो एक्सट्रीम राइट में है, मतलब एक्सट्रीम राइट टेक्स्ट ऑप्शंस यहाँ पे, यहाँ के ऊपर बोल रहे हैं आप? ऊपर सर वो फॉर्मेट एक्सिस जहाँ पे लिखा हुआ है ना, वहाँ पे एक्सिस ऑप्शंस के बाजू में ये टेक्स्ट इधर फॉर्मेट है. फॉर्मेट एक्सिस किधर है? जो राइट क्लिक करके आया था वो उसकी बात कर रहे हैं सर. ये जो राइट में कॉलम था ना, ये फॉर्मेट चार्ट एरिया, चार्ट ऑप्शंस, टेक्स्ट ऑप्शन. हाँ ये फॉर्मेट चार्ट एरिया, राइट. नहीं इसमें नहीं आएगा, इसमें तो टेक्स्ट ऑप्शंस में देखिएगा. अरे लेकिन कहाँ पे है वो तो बताओ. टेक्स्ट ऑप्शन कहाँ है? इसकी बात कर रहे हैं क्या? आउटलाइन, हॉरिजॉन्टल. ओके, चार्ट एरिया, चार्ट टाइटल है, हॉरिजॉन्टल. ओके ओके, यस ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस. हाँ सर, वो चार्ट टाइटल में होगा सर.
चार्ट टाइटल तो वो ऊपर टाइटल आएगा, चार्ट पूरे चार्ट के लिए टाइटल आता है। सॉरी सॉरी, एक्सिस टाइटल बोल के रहता है सर। हम वही तो मैं खोज रहा हूँ ना, वो नहीं मिला ना मेरे को। ये देखो, चार्ट एरिया है, चार्ट टाइटल है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेजर ग्रिड लाइन, प्लॉट एरिया, वर्टिकल एक्सिस मेजर ग्रिड लाइन और सीरीज पीएच, इतना आया, राइट। एक ऑप्शन हो सकता है कि मे बी आई विल गो टू दिस इंसर्ट एंड टेक्स्ट बॉक्स है इधर, ओके। तो इफ आई कैन पुट टेक्स्ट बॉक्स हियर तो मेरा काम हो जाएगा वैसे। ओके, आई विल पुट NaOH इन ब्रैकेट, आई विल पुट ml, बराबर है। ये मैं कर सकता हूं, लेकिन ये करेक्ट तरीका नहीं है। सी दैट आई हैव एडेड दिस, ये ऑप्शन तो था मेरे पास, लेकिन ये बराबर नहीं है ऑप्शन। ओके, आइडियली क्योंकि ये वर्जन जो है ना, ये कुछ अलग वर्जन है विंडोज का, विंडोज 10, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है। आई एम नॉट एबल टू गेट द सेम काइंड ऑफ ऑप्शंस which were available in the earlier version. Anyway, तो ये तो तुमको इतना समझ में आया। You can put the titles like this by putting a text box. Okay, ये जो ग्रिड लाइन है अंदर, स्क्वायर स्क्वायर जो है ना, if you want you can remove that. Okay, so go to format plot area. ये आता नहीं है, मैं सिलेक्ट करता हूँ लेकिन वो ऑप्शन नहीं दिखते मेरे को। That is the problem with this version. I don't know why it is happening like that. ये देखो, मैंने फॉर्मेट ग्रिड लाइन आ गया इधर, ओके। तो ये ग्रिड लाइन के ऊपर ऐसा सिलेक्शन हो गया। इफ आई प्रेस डिलीट देन इट विल बी गॉन, ओके। अभी ये जो लाइंस है इसको भी मैंने डिलीट किया तो वो भी चले गए, राइट। सो आई कैन मेक इट अ मोर क्लियर इमेज, राइट। बट इफ आई वांट टू ऐड इट अगेन तो क्या कर सकते हैं? वो ऑप्शन दिखना चाहिए था इधर। एनीवे, अपना जो इम्पोर्टेंट था बात है वो तो मैंने आपको दिखा दिया, ओके, हाउ टू प्लॉट द ग्राफ। अभी तुमको क्या करना है कि वंस यू गेट दिस काइंड ऑफ अ ग्राफ, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, इमेजिनरी लाइन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कर्व, ओके। ऐसा पॉइंट निकालो कि जहाँ पे पीएच का डिफरेंस बहुत कम रहेगा, change in pH is the minimum, okay, and from that point you extrapolate to the pH axis, that is the y-axis, and then you will be able to find out the pKa value for that weak acid. Is it okay? क्या नहीं सबको हो सकता है ना ये? Everybody can do that on Excel. Okay, shall we revise it again if you want? Yes, sir. रिवाइज करना है, ओके। मैंने क्या किया, आई हैव सिलेक्टेड, मैं ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, NaOH और pH का मैंने किया था ना पहले सिलेक्ट, सो आई विल नॉट टेक दैट पार्ट, आई विल नॉट इंक्लूड दैट टॉप रो, ओके। सेकंड रो के आगे मैं गया, आई हैव सिलेक्टेड ऑल दिस डेटा पॉइंट्स, ओके। देन आई गो टू, ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, नहीं, आई विल गो हियर इन इंसर्ट, then I'll select the type of the graph, that is XY scatter chart, okay। और scatter chart में this option is only the dots only, okay, without the line, and this option is the dots with the line, okay। this option जो है इसमें straight line नहीं आते, curve line नहीं आए, we want a curved line, okay, so that it looks better. So either I go to this or this option. इसमें मेरे को डेटा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ओनली लाइन मिलेगी मेरे को, ओके। इसमें मेरे को लाइन और डेटा दोनों मिलेगा, डेटा पॉइंट्स, ओके। सो आई विल सिलेक्ट दिस, राइट। तो ये मेरा चार्ट बन गया। चार्ट बनाना बहुत इजी है। एंड देन ये क्या है इधर, प्लस,
ओके इधर है देखो, just a minute, I'll shift this part here and okay, can you see these options? ये नहीं दिखा था मेरे को पहले. Okay, so if I go to this plus sign, then axis title, देखो इधर axis title दिख रहा है. Can you see that? हाँ हाँ यही वाला. Okay. Yes, sir. ये मेरे को मिल गया अभी. Okay, so this version is also good, no problem. Axis titles, इसमें अगर मैं गया तो I have probably I'll get two options here. One is the primary, sorry. Anyway, दोनों मेरे को इधर मिल गए. Can you see these boxes here? This box and this box. Okay. Yes, sir. तो ये बॉक्स के अंदर जाके मैं टाइप कर सकता हूँ. ओके, आई कैन टाइप वॉट एवर आई वांट. तो इसमें क्या टाइप करना है मेरे को, कौन बताएगा? NaOH. NaOH इतना ही लिखना है बस. In ml. NaOH in ml. Units are very important. You must write the units also. ओके, तो ये मैंने लिख दिया और यहाँ पे मेरे को लिखना है क्या? pH. ओके, pH. ओके, pH के लिए कोई खास यूनिट नहीं है, pH यूनिट ही होता है. ओके, सो आई कैन राइट pH हियर ओनली. राइट, चार्ट टाइटल देना है कुछ, वी कैन पुट द चार्ट टाइटल ऑल्सो. क्या देना है टाइटल? Find out pK. pH titration curve for acetic acid, करेक्ट है? Yes, sir. ओके, और कुछ करना है तुमको? दैट इज ओके. हाँ, तो इतना असाइनमेंट करेंगे सब जन, राइट? और कल के सेशन में बता दो, कल भी एक हम डिस्कशन करेंगे दूसरे प्रैक्टिकल का. तो उस समय मुझे ये बोलो, कुछ डिफिकल्टी होगी तो बोलो, नहीं तो सबमिट कर दिया तो भी चलेगा. यू कैन सबमिट द एक्सेल शीट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. एक्सेल का जो भी डेटा तुम्हारा है ना, वो फाइल मेरे को तुम सेंड कर सकते हो. ओके, आइदर ऑन द व्हाट्सएप और बाय ईमेल, कैसे जैसे भेजना है वैसे भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं तो फोटो निकाल के भेजा तो भी चलेगा. ओके, इफ यू आर पुटिंग इट ऑन अ ब्लैंक पेपर और अ ग्राफ पेपर, okay, then you can take a photo shot and you can send it to me. Is it okay? तो प्रैक्टिकल में कोई तुमको डिफिकल्टी है क्या? Have you understood the practical? You Yes, have sir. to imagine that you are doing the practical. Okay, that is the main important thing here. सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि you have to, as if you are actually doing it in the laboratory, you have to imagine that. ओके, सबको लगा क्या प्रैक्टिकल किया इसे लैब में? नहीं. हाँ, नहीं लगा? इसको नहीं लगा? ग्राइंड आउट नहीं किए सर. हाँ, हेलो. So shall we end the meeting? Okay. We'll end the meeting.